हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे टॉपिक जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन के ऊपर। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन के ऊपर वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो जेनेटिक कोड होता है, इस टर्म को किसने दिया है? ज्यूज गैमो ने इस टर्म को दिया है। जेनेटिक कोड को जो जो टर्म है, इस टर्म को देने वाले हैं ज्यूज गैमो। और डिस्कवर किसने किया है? डिस्कवर इसमें एक ने नहीं किया बल्कि तीन ने मिलकर किया है। जेनेटिक कोड को तीन ने मिलकर किया है। पहले जो नाम दिया गया यहाँ पे वो है निरिनबर्ग, दूसरा है मिथाई और तीसरा है खुराना। ये जो तीन है, इन तीनों ने डिस्कवर किया है जेनेटिक कोड को। देखिए जेनेटिक कोड relationship between the sequence of amino acids in a polypeptide chain and nucleotide sequence of DNA or mRNA is called genetic code। ठीक है, देखो कैसे एक न्यूक्लियोटाइड एमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें कम से कम तीन होते हैं, तो तीन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और एक ग्रुप जो है वो एक अमाइनो एसिड बनाएगा और जो एक अमाइनो एसिड है वो क्या बनाएगा? वो कोडान बनाएगा। तो ये सीक्वेंस जो होता है अमाइनो एसिड का, पॉलीपेप्टाइड चेन का, और जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है डीएनए या एमआरएनए का, उसी को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। There occur 20 types of amino acids which participate in protein synthesis। तो कितने आपको अमाइनो एसिड्स जो है देखने को मिलेंगे? 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। DNA contains information for the synthesis of any type of polypeptide chain. In the process of transcription, information is transferred from DNA to mRNA in the form of complementary end-to base sequence। तो जैसे आपको पता ही है कि जो आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ऐसी प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड टू बेस सीक्वेंस होता है यहाँ पे। ठीक है ना, और एमआरएनए कंटेन करता है कोड ऑफ ईच अमाइनो एसिड और उसको हम कहते हैं कोडॉन। जैसे आपने पढ़ोगे ट्रिपलेट, ठीक है ना, तीन का बंध है ना, तो ट्रिपलेट बनता है। तो एमआरएनए की बात करें, कंटेन करता है कोड ऑफ ईच अमाइनो एसिड, जिसको हम कहते हैं ट्रिपलेट। जो कोडॉन होता है इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए विच कोड्स फॉर पार्टिकुलर अमाइनो एसिड। तो हम इसी के रिलेटेड आज के जो है क्वेश्चन जो है आज के होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। जैसे यहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर जो पहला क्वेश्चन हुआ है, इफ जेनेटिक कोड इज tetraplet then what is the possible number of codon which code 20 types of amino acid। अगर आपको लगे कि जो जेनेटिक कोड है वो टेट्राप्लेट है, तो व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ कोडॉन्स विद कोड 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 256। कितना आएगा? 256। तो यहां पे कैसे बनेगा? देखो जैसे यहां पे लिखा है टेट्राप्लेट, टेट्राप्लेट से आपको समझ सकते हैं कि ये क्या होगा? 4 into 4 into 4 into 4। तो ये कितना बन गया? 256। ठीक है ना। ए कोडॉन इन एमआरएनए हैज, ए कोडॉन इन एमआरएनए हैज, कितने होते हैं इसके? 3 बेसिस होते हैं। ए कोडॉन in mRNA has 3 bases। A DNA strand is directly involved in the synthesis of all the following except। A DNA strand is directly involved in the synthesis of all the following except another DNA, yes, tRNA and mRNA, yes, rRNA, yes, protein, no। Genetic code was discovered by, genetic code was discovered by निरिनबर्ग एंड मिथाई ने किया था। जेनेटिक कोड was discovered by निरिनबर्ग एंड मिथाई। Genetic code was deciphered by chemically synthesizing the trinucleotides by, genetic code was deciphered by chemically synthesizing the trinucleotides by
निरनबर्ज, MY निरनबर्ज इसका सही आंसर है। 64 codons constitute genetic codes because genetic code is triplet. Genetic code is triplet. Codon constitute genetic code because genetic code is triplet. Okay. A degeneracy of genetic code was discovered by Bjornfield and Nernberg. Degeneracy. Genetic code consists of adenine and guanine and cytosine and uracil. Yes, all is जो है इसका आंसर आएगा। Which codon give signal for the start of polypeptide protein chain synthesis? Which codon gives signal for the start of polypeptide chain synthesis? The answer is AUG. The answer is AUG. The function of nonsense codon is. The function of nonsense codon is. The answer is to terminate the message of gene controlled protein synthesis. To terminate the message of a gene controlled protein synthesis. mRNA is attached with. mRNA is attached with. The answer is a ribosome. The answer is ribosome. Sometimes the staining codon is GUG in place of AUG. GUG normally stands for valine. Which one of the following triplet codes is correctly matched with its specificity for an amino acid in protein synthesis or as start or stop codon? The answer is UAC tyrosine. UAC tyrosine. During translation initiation in prokaryotes, a GTP molecule is needed in. During translation initiation in prokaryotes, a GTP molecule is needed in. The answer is association of 30S mRNA with formyl met tRNA. Okay, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, एसोसिएशन ऑफ 30S mRNA with tRNA. Degeneration of a genetic code is attributed to generation of a genetic code is attributed to the third member of a codon. Protein synthesis is in animal cells occur. Protein synthesis in animal cells occurs on ribosomes present in cytoplasm as well as in mitochondria. On ribosome present in cytoplasm as well as in mitochondria. Which one of the following statement is true for protein synthesis? Which one of the following statement is true for protein synthesis? Means translation. The third base of the codon is less specific. The third base of codon is less specific. The drug streptomycin inhibits the process of eukaryotic translation. Translation is the process in which protein is formed from RNA message. In a polypeptide chain of 125 amino acids, if the 25th amino acid is mutated to UAA, then a polypeptide of 24 amino acid is formed.
then a polypeptide of 24 amino acid is formed. In a polypeptide chain of 125 amino acids, if the 25th amino acid is mutated to UAE, then a polypeptide of 24 amino acid is formed. The first codon discovered by Nirenberg and Mithai was the first codon discovered by Nirenberg and Mithai was U. Okay, ये था. Which of the following is not correct about translation? It starts with AUG, yes. Stopped at termination codon, yes. Based on operon model, yes. Occurs in nucleus, not. Which of the following is not correct about translation? So occurs in nucleus, this is not correct. tRNA attaches amino acid at its tRNA attaches amino acid at its 3' end. Arrangement of three successive bases in the genetic code signifies arrangement of three successive bases in the genetic code signifies amino acids. क्या आंसर आएगा इसका? अमाइनो एसिड्स. Out of 64 codon, only 61 codes for 20 different amino acids. This character of genetic code is called. Out of 64 codons, only 61 codon for the 20 different amino acids. This character of genetic code is called. The answer is degeneracy. The answer is degeneracy. Anticodons are found in mRNA, tRNA, RNA in all. तो आंसर आएगा tRNA. एंटीकोडॉन जो होता है tRNA के अंदर आपको देखने को मिलेगा. One gene, one enzyme. Hypothesis was proposed by. The answer is Beadle and Tatum. Beadle and Tatum. How many ATP and GDP molecules are required respectively for incorporation of 25 amino acids in peptide chain? The answer is 25 ATP and 50 GTP. The correct answer is 25 ATP, 50 GTP. Which of the following RNA plays structure and catalytic role during translation? The answer is rRNA. The answer is rRNA. Transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to a polymer of amino acid is called translation. Transfer of genetic information from polymer of nucleotide to a polymer of amino acid is called translation. Translation refers to the process of polymerization of amino acids. Polymerization of amino acid is the correct answer. Khurana and his colleagues synthesized an RNA molecule with repeating sequence of UGN2 bases. The RNA with UGU, GUG, GUG produced a tetrapeptide with alternating sequence of cysteine and valine. This proved that codon for cysteine and valine is. The answer is UGU and GUG. This is the correct answer. तो ये थे genetic कोड्स और ट्रांसलेशन के ऊपर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. देखिएगा आप इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम के अंदर. अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितना हम पढ़ा रहे उतना आपके लिए काफी रहेगा. और हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं. ठीक है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है टेस्ट सीरीज के लिए हमने तैयारी जारी है. तो हम देख रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे. तो हम इनमें से भी चूज करेंगे और एक्स्ट्रा भी लाएंगे ताकि आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाए.